Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम एक और numerical question solve करेंगे simple pendulum, which is an example of simple harmonic motion. तो simple pendulum पे हम दो numerical question solve करेंगे, example 10.4 and assignment 10.4 class 10 chapter number 10. इससे आपको सिंपल पेंडुलम टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स फॉर अ पेंडुलम bob of mass 100 gram that has been pulled to an angle of 10 degree from the vertical. Suppose this is a pendulum. Now if this pendulum is displaced from its mean position, from its vertical position through an angle of 10 degree, through an angle of, then what is the magnitude of restoring force at this point which is acting on the bob of the pendulum? This is the situation. अगर हमने इस पेंडुलम के bob को 10 डिग्री तक इस यहाँ पर डिस्प्लेस किया हुआ है, तो इस पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर कितना रेस्टोरिंग फोर्स अमल कर रहा है. 3 स्टेप्स: गिवन डेटा, रिक्वायर्ड एंड सोल्यूशन. गिवन डेटा में अब देखें, एक हमें मास की वैल्यू दी गई है 100 ग्राम. मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको बताया था कि ग्राम ये चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मास के लिए स्टैंडर्ड यूनिट केजी है. इसी वजह से हम सबसे पहले 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, 100 ग्राम को केजी में. अब आप देखें 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन डिवाइडिंग बाय 1000 both sides, this will be cancelled. 1 gram, 1 gram will be equal to 1 over 1000 kg. 1 gram is equal to 1 over 1000 kg. 2 gram will be equal to 2 over 1000 kg. 3 gram will be equal to 3 over 1000 kg. Then 100 gram will be equal to 100 divided by 1000 kg. On division, it will give 0.1 kg. Angle 10 degree, value of G जो कांस्टेंट है, and the surface of earth 9.8 meter per second square. Required is restoring force, the magnitude of restoring force. अब यहाँ पर देखें, सिंपल पेंडुलम पे हमने डिटेल के साथ एक टॉपिक, एक लेक्चर बनाया हुआ है, एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह इस बॉब ऑफ द पेंडुलम में रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है. ये रेस्टोरिंग फोर्स, इसका वेट, the weight of the pendulum provide the restoring force, but the weight has two components. One is along this direction which support the tension in the string, Wx, it support tension in the string, and the other is toward the mean position. This component of the weight Wy provide restoring force. ये Wy restoring force provide कर रहा है. हम डिटेल में नहीं जाएंगे. Restoring force is provided by the y component of the weight. The negative sign shows the opposite direction of force and displacement. अब यहां पर देखें, F restoring is equal to minus W sin theta. F restoring is equal to minus W is equal to mg sin of theta. Now putting the values, सारी ही values हमें दी गई है, तो सिर्फ values दर्ज करने से minus m is 0.1 multiply by G 9.8 multiply by sin theta is 10 degree. Now the restoring force will be equal to minus 0.1 into 9.8. It will give minus 0.98 multiply by sin 10 is equal to 0.17. 0.17. Now multiplying these two, we will get F restoring is equal to minus 0.167 Newton. This is the magnitude of restoring force which is acting on the bob of the pendulum at this position. अब हम इसी पर सिंपल पेंडुलम पर restoring force of the on the pendulum, इसी इक्वेशन पर एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, assignment 10.4. Now assignment 10.4, at what angle must a pendulum be displaced to create a restoring force of 4 Newton on a bob with mass of 500 ग्राम? अगर इस पेंडुलम के बॉब का मास 500 ग्राम हो, मीन्स 0.5 kg, और
इस पोजीशन पर 4 न्यूटन रेस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो हमने इसको किस एंगल पे डिस्प्लेस किया हुआ है, हमने इस पेंडुलम को कितना डिस्प्लेस किया हुआ है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब देखें यहाँ पर गिवन डेटा रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू दी गई है, मास ऑफ द पेंडुलम की वैल्यू दी गई है, वैल्यू ऑफ जी और रिक्वायर्ड थीटा, वो एंगल फाइंड आउट करना है। वंस अगेन यहाँ पर हम एक बार फिर 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 500 डिवाइड बाई 1000 kg, this will be equal to 0.5 kg. नाउ सोल्यूशन हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी लिखा, रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो हम वैल्यूज पुट करें, या सबसे पहले mg को दोनों अतराफ से डिवाइड करने से इट विल गिव इफ रेस्टोरिंग इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर भी mg से डिवाइड करने से यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि थीटा फाइंड आउट करना है। सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ रेस्टोरिंग डिवाइडेड बाई mg। आप यहाँ पर वैल्यूज लगाएंगे हम, एफ रेस्टोरिंग की वैल्यू 4, m की वैल्यू 0.5, g की वैल्यू 9.8। So it will give sin theta is equal to 4 divided by 4.9, and dividing 4 divided by 4.9 we will get 0.8. sin theta is equal to 0.8. अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8। जब साइन को हम उस तरफ ले जाएंगे तो वहाँ पर ये साइन की बजाय साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.8। अब इसको कैलकुलेट करने से वी विल गेट 53 डिग्री। सो इफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, देन 4 न्यूटन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉब ऑफ द पेंडुलम एट दिस पोजीशन। अगर हम बॉब ऑफ द पेंडुलम को 53 डिग्री डिस्प्लेस करें, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इस पोजीशन पर फिर इस पर 4 न्यूटन रेस्टोरिंग फोर्स अमल करेगा। उम्मीद है ये प्रॉब्लम्स, ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में विद सम अदर न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक।